So welcome to the 13th lecture. क्या किया हमने last time? We were on a quest to answer a question, right? And we did answer that. So क्या था question? So the output of an arbitrary input of an arbitrary system to an arbitrary input. Yeah. So उसको हम model करना चाह रहे हैं. So what were the two key things we used? Yes. Firstly, subclassifying, yes, the systems. So this was the question. You have xn, you don't know what the system is, it's a black box, and you are asked to model the output. This is some system. We said, okay, first thing we'll do is we'll limit ourselves to LTI. Yes. Then we said, we noticed that actually we can use xn, yeah, as a sum of scaled and shifted impulses. Yes, we किया था काफी डिटेल में. But then we realized if this is LTI and this is the sum of scaled shifted impulses, let's say I just send a delta n, I get the output hn. So you have to probe the system sometime. एक दफा आपने उसको प्रोब करना है एक इनपुट के साथ, फिर आप बाकी इनपुट्स का जवाब दे पाएंगे. But this is so powerful कि you simply have to probe it with a nudge. Yeah, quick सा एक impulse मारना है. Whatever output it gives, now having this information and knowing that this is LTI, you can answer this for any, चाहे ये triangular shape का हो, pulse shape हो, sinusoidal shape हो xn की. Now if I tell you what if I give an input that looks like this, you can answer just based on sending an input that looked like this. एक impulse भेजी आपने, hn मिला आपको, इसको हम क्या कहते हैं? Impulse response. Yes, this guy was the very powerful thing, impulse response. Just nudge the system, whatever output you get, call it the impulse response. Yes, and that you can use to answer this question for any input, arbitrary input. क्या होगा? Since delta n leads to hn, then shifted delta n will lead to shifted hn. Yes, hn minus k. Scaled delta n will lead to scaled hn, which is because of LTI. So same scaling apply होगी. And the sum will lead to sum superposition पूरी की पूरी apply होगी. This was the answer. Yeah. And this thing we called what? इस function को हमने एक नाम दे दिया जो हमारे काम का है. That is a convolution. Right? So then we went on to study some properties of convolution and some practice problems in convolution. Yeah. So this is the trick we will be using then. किसी system को once you identify this LTI, all you have to do is, वो अब system पे depend करेगा, ये circuit है, कोई physical pendulum लटक रहा है, क्या है. Once you identify that it is LTI, all you have to do is give it a nudge, get the output, save that output as hn, and then you can answer any question. क्योंकि मैं एक simple nudge नहीं देता pendulum को, मैं जो है वो हर थोड़ी देर बाद तीन दफ़ा उसको छेड़ता हूँ बीच में. या क्या आएगा जवाब? If it is LTI and you know the response to a single nudge, you can tell them by this calculation what will be the output, how would it respond. Yeah. So इस पूरे से दो चीज़ें निकली थी बहुत अहम. LTI तो पहले हो गया. या. So we said one important concept was impulse response and the other one was convolution. So last time we looked in detail on what the convolution means. देखा था हमने वो system क्या हो रहा था? Input, this is, there are two ways of looking at it. Remember it's commutative, so you can also write it like hk x n minus k. The two are the same. Yeah, this is more instructive in the sense that this shows you what you're doing is you're sending, you flip the input, ये जो आपका xn था, जो भी input था ये ऐसे, you flip it to make it natural, जो पहले आता है वो पहले आएगा. Yeah,
and then send it through the system. The system is these responses H के, वो उसके साथ रिएक्ट करते हैं, आपको एक रिस्पॉन्स मिलता है. फिर अगला इनपुट एंटर होता है, वो रिएक्ट करते हैं, एक और रिस्पॉन्स मिलता है. फिर अगला इनपुट एंटर होता है, रिएक्ट करते हैं, एक और रिस्पॉन्स. जब तक वो इनपुट्स और रिएक्शंस क्लोज नहीं हो जाते आप करते रहते हैं, रिस्पॉन्स आता रहता है. वो हमने we did that by sliding tape method also. ये अगर आपका इनपुट है, ये आपका impulse response है, this is the 0, flip the input, write it like this, yes, making sure that the zeros align. अगर zeros आपके पास एक इनपुट या impulse response शुरू ही 2 से हो रहा है तो पीछे आप zeros खुद से डालेंगे, एक्स्ट्रा बॉक्सेस बना के zeros डालेंगे. Let's say आपको मैं कहता हूँ कि impulse response एक्चुअली शुरू ही 1 पे होता है, यहाँ पे 0 है. So don't put, let's say this is 1 2 0 1 2, then don't put 1 here, you have to align with 0, so add a 0 then 1 2. Yeah, इसको आप flip करेंगे. Now this is what I just mentioned, the input is going through the system, the system's response is reacting with the input as it enters the system, और हर एक पे वो उनका रिएक्शन जो है वो आपको in the form of a convoluted output मिल रहा होता है. Yeah, so now that was about convolution. Yeah, but now we also want to go into this guy. What does impulse response really mean, and what are its benefits? Where can we use it? What other ways can we use it? Of course we can use it to get the output, that is of course where it starts. But what does it really mean? इसकी interpretation क्या है, इसकी visualization क्या है, impulse response की. Yeah, mathematically तो या in terms of system तो हमने बता दिया. What is impulse response? It's the response of a system to an impulse input. Yeah, that's it. Simple as that. जो नाम है उसका वही है. But then थोड़ा सा अब हम इसको विजुअलाइज करेंगे थोड़ा समझने के लिए. Let's say I tell you that the system has an impulse response. फिर आप मुझे बताएंगे कि वो जो हमारा डबल शाह था और क्वाड्रुपल शाह था उनका impulse response क्या है. First let's say I tell you that the impulse response of a system is 2 4 8 with an arrow here, meaning this is response H0, that is H0 H1 H2. Yeah, so what does this really mean? क्या मतलब बनेगा इसका? ये 2 क्या है, ये 4 क्या है और ये 8 क्या है? What is going on in the system कि उसने इस तरह का कुछ response दिया है, right? ये visualization आज हम करना चाहते हैं. Okay, so we don't just want to work with the numbers and vectors, or yeah, we want to have a physical imagination for that thing. Yeah, so जैसे अभी आपने convolution को देखा है ना, system में से गुजरा input. Now we want to see the impulse response. Firstly, how do you get it? I already mentioned. You will send a impulse to the system and see how it responds. जो वो response देता है उसको आप record कर लेंगे. अब ये बताएं कि क्या एक इनपुट, impulse तो एक इनपुट है ना, उसके response में ये 3 क्यों आते हैं? Let's say 3 आ सकते हैं. इनपुट आपने एक भेजा है, जवाब 3 आए हैं, ऐसे ही. This is what we are saying, right? What is HN? HN is the response to delta n. So what I am saying when I write this, I am saying that I sent in a unit impulse and the output I got was at 0 a 2, then a 4 and then an 8. The response to one single nudge were 3 responses. या उस तरह का, या एक के बदले में से 3 response दिए मुझे, 3 nudge दिए हैं या कुछ भी दिया है. तो ये हो सकता है, या एक के बदले में एक ही आना चाहिए. टाइम इनपुट्स मल्टीपल टाइम इनपुट्स तो नहीं आना चाहिए, फिर एक नहीं आना चाहिए. सो जस्ट थिंक ऑफ पेंडुलम. पेंडुलम ऐसे है, या लटका हुआ.
You give it a nudge. You just get one output. Let's say you are measuring the position of the ball on the pendulum. Yeah. So कैसा आउटपुट मिलता है एक नज के बदले में? सर वो 3 फिर आते हैं ना, साइनसॉइड आता है पेंडुलम के। यस हाँ, तो अगर मैं उसको कंटिन्यूस में ड्रॉ कर दूं, we can sample it to get that, लेकिन a simple nudge to a pendulum, yeah, ये है pendulum लटका हुआ है, a simple nudge leads to, ऐसे नहीं अगर इसकी आप पोजीशन मेजर कर रहे हैं with respect to this player, this point, पोजीशन को आप करते हैं ना फिजिक्स में, बेसिक फिजिक्स में पेंडुलम, तो वो निकलता है करते 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 स्लो होते होते रुक जाएगा वापस अपनी पोजीशन। Yeah. So notice one small nudge led to इतने सारे उसने दिए. This is the impulse. अगर आप इसको discrete time में देखें, इसके सिर्फ आप सैंपल्स देखें या ऐसा केस हो जहाँ पे वाकई discrete हो, this will look like this thing, yeah. तो इसी का discrete version वो नजर आएगा आपको, ऐसे जाता हो. So yes, single input can give many responses. Double shah, was that a single response या उसने double response दिया? डबल। आप उसे एक ही चीज देते थे, दिन बाद वो आपको 2 दे देते थे। So एक ही response आता है. नहीं वो अपनी साइड से भी एक डाल देते हैं ना, तो 2 रिस्पांस आपको नहीं, response तो एक ही मिलता है, double करके मिलता है. डबल द अमाउंट। तो उसका जो response है वो ऐसे था ना. यस सर। या लेकिन आप quadruple shah पे जाए, यस सर। आप एक देते थे एक दिन, पहले दिन वो 2 रुपए देता था, डबल देता, दूसरे दिन फिर डबल देता. So that guy had a response, 2 responses to each one. Single pulse या single impulse पे वो 2 response देता था, right? So you can have as many as you like, depends on the system. Yeah. Now again, what does this mean for us? What is really happening in here? कि ये क्या हो क्या रहा है सिस्टम के अंदर जो ये रिस्पॉन्स देता है. So what we are saying is, okay, if I send an impulse at n equal to 0 of value 1, I get 2, 4, 8. Yeah. So what is happening inside the system? There are many ways to look at it. Basically the system is saying, let's say if you, ये तो डेल्टा है ना, what if I send in a delta n, क्या आएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ। कैसे? AHN. So this would be plot अगर करें 2a 2a 4a 8a 8a, right? Clear? Why? Because this is LTI homogeneous. Now let's say we are sending in an a. So what's really happening? What is this system doing from our point of view? It's saying if you give me a, yeah, I will give you the a times 2, okay, then I will take the a, I will delay it by 1 unit and multiply that by 4, and then I will take that same a and delay it twice and multiply that by 8, and then this is your output. At n equal to 0 I will give you this, at, if you want to, at n equals 1 I will give you this, and at n equals 2 I will give you this. ये कर रहा वो, right? It's saying if you give me a, I will take it, multiply it by 2 and give you the answer at n 0, which is, as you said, 2a. Yeah. Then I will delay your input 1 unit and multiply it by 4 and give you 4a. Then I will delay your input twice and give it the response 8 times of that. Yeah. Now notice what happens if I now send in, let's say मैंने एक a दिया था, उसके साथ में अब एक b भी भेज देता हूँ. Yeah. So instead of just sending a delta n, yeah, I am sending a
delta n plus b delta n minus 1, meaning a here and b here. ठीक है? Now what's going to happen? This system is saying, okay, I will take a multiplied by 2 and give you the answer here. Yes? क्या आएगा? Answer क्या आएगा उसका? 2a, right? At n equals 0. Then it says, I will delay your a and multiply it by 4. So I will give you 4a here, and then I will delay twice. But notice, before this output could occur, this one, you had already entered at n equals 1, you had already entered another input into the system, which is b. अब उसके साथ भी यही कुछ होना है. Yes? So it's going to take b multiplied by 2 and give it to you. Right? वो कहाँ आएगी? 2b कहाँ आएगा? यहाँ, यहाँ या यहाँ आएगा? Sir, left hand side. 2b जो है, b आपने भेजा है एक स्टेप बाद में, या? So N equals to 1. 2b will be with this guy. Yes, क्योंकि वो एंटर ही उस वक्त हुआ है. And then it will delay the b by 1 unit and give you 4 times b. 1 unit delay will be here, so you will get whatever 4 times b becomes, and then it will give you 8 times b. ये जो overlap है, इनको आप जब sum कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, you will get the full response. That is convolution again. Yeah. But the thing to notice is that this is what an impulse response means. आपके हर input के against मैं ये करूँगा. What was called Rabelshaw's impulse response? You can put So he said, if you give me 2 rupees today, यही था ना? I will give you 4 tomorrow and 8. Sorry, 2 tomorrow and 2 day after tomorrow. Yeah, so it's saying, if you give me at n equals to 0, 2 rupees, that is your xn, I will give you, my hn is what? I will give you 2 rupees. Tomorrow था ना? उस दिन वो कुछ नहीं करता. उस दिन तो कुछ नहीं. Next Yeah, नहीं होता. और 2 rupees day day after tomorrow. Right? This is the impulse response. Yeah. Now there is another fun way of showing it. Is this a system can be made of you guys? Like आप तीनों बैठे ना. Let's say we make a system based on you. Yeah. So I will say a number. First you will multiply it by 2 and give me the answer. Then you will multiply it by 4 and give me the answer. And then you will multiply by 8 and give me the answer. ठीक है? So 0, 0. ये आपका impulse response ये वाला है. Right? 2, 4 बारी बारी आ रहा है. Right? And पहला दूसरा रिसर्च है. 1, 2, 3. आप जारी रखें अपना. राइट? ओवरलैपिंग शुरू हो जाएगी ना. ये होता है जब आप इनपुट्स देते जाते हैं तो क्या होता है, वो ओवरलैपिंग शुरू हो जाती है. और दैट इज वेयर कॉन्वोल्यूशन comes in. Now before you have got to doubling the 2, I gave the next input 3, you have to start doubling it already, right? और वो सारी ओवरलैपिंग शुरू हो जाएगी. That is convolution. Yeah. So a system basically has these components inside. Now notice, we are not interested in how this system is. ये तो मैंने उसका एक लॉजिकल बनाया है. अंदर उसके सर्किट्स हैं, क्या है, we are not interested in that. हमें सिर्फ उसका लॉजिकल बिहेवियर जो समझ आ रहा है ना, जो हमारे काम आता है, वो हमने करना है. And that is black box modeling. Basically you, without going to physics, chemistry, biology, physiology, economics of this, you did that. Yeah. So अच्छा, अब quick question. Let's say, what does this impulse response say? I'm going to draw an impulse response. If you understand this interpretation,
6. ये है impulse response of a system. Yeah, what's this system doing to the input? नहीं ये impulse response आप input का पूछ रहे हैं कि ये impulse response को explain करें, what is it? जैसे अभी हमने किया था ना कि वो वाला कर रहा था 2a twice करता था, फिर delay करता था, फिर 4 times देता था input का, फिर 8 times देता था. Yeah, so let's say this is the impulse response. What is this system doing? This system का ही है ना impulse response, LTI system का impulse response है. Just imagine, let's say I give it an input a at n equal to 0. What's the output? one n minus 50 पे जो है ना उस फंक्शन का रिस्पॉन्स जो है एम्पलीट्यूड क्या ले लें, उसकी डिस्क्रीट वैल्यू दे रहा हूँ. So if I send in a delta n, meaning I send in an input to this system. So this is the system and the input coming here is a delta n at n equal to 0. If I'm sending this inside, what do I get here? a AHN n minus 50. A. So अच्छा ये 50 है सर, I thought under root 0 है. नहीं नहीं, अच्छा ये 50 50 होगा. under root 0 तो 0 ही होगा. Right, n equals 50. So this system is saying whatever input you give me, I will delay it by 50 units. That's it. It's a simple delay function. Delay system है ये. Yeah. So if you give me an impulse at n equal to 0, I will give you an impulse at n equal to 50. Yeah. If you give me some particular shape like this, I will delay that to 50 units. Yeah. Okay. So again, what we need to understand is what this really means. Yeah. सर Hmm. सर आपने अभी एक सिस्टम का बताया था जो कि एक इनपुट को उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स दे रहा था, Hmm. फिर आपने उसको कोई रिवर्ट करके कोई चीज़ समझा दी, वो समझ नहीं रिवर्ट करके यानी सिग्नल को वो किया था. कोई बॉक्सेस में कुछ किया था आपने. वो tape method. हाँ, वो लास्ट लेक्चर का है ना. और थोड़ा सा वीडियो देख लें फिर बताएं अगर नहीं समझा. राइट. So that was the sliding tape method. It was quick review of what we हमने डिटेल में वो किया लास्ट में, लेकिन दोबारा देखने अगर नहीं समझ आती तो मुझे just visit me. Yeah. Okay. So now I want to give you another interpretation of the impulse response before we move on. आपको इनिशियल कंडीशंस का तो पता है. जी कहाँ सुनी है? सर सर्किट में. सर्किट वगैरह में और भी कहीं सुनी होंगी यार. क्या हो गया? जब और भी कहीं सुनी होंगी. बेसिक इंटीग्रल्स में आती है ना. इनिशियल कंडीशंस आती हैं उसमें. या सो डू यू नो व्हाट इज जीरो इनपुट, जीरो इनपुट रिस्पांस एंड जीरो स्टेट रिस्पांस? ये कहीं सर्किट वगैरह में किया आपने? जीरो स्टेट जीरो स्टेट तो होता है जब इनिशियल कंडीशन जीरो, जब आप इंटीग्रल सॉल्व करते हैं ना विद द इनिशियल कंडीशंस टेकन एज जीरो, यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट जीरो स्टेट. या so one other interpretation of impulse response is IR is the zero state response of a system. Yeah. So it assumes that the system before the input went in, the system was at rest. उसके अंदर अपनी कोई एनर्जी या वो चीज़ें जमा नहीं हुई थी. Right? So if they are in there, then we have to expand this or extend this to cover everything. Yeah. So let me give you an example of zero state and zero input. Let's say you have
this circuit, some resistor here and a switch here and a capacitor here, and this switch is thrown at t equal to 0, this capacitor. So what we want to find is the voltage here. Yeah. So कैसे होगी voltage का curve क्या होगा? Circuits पढ़े हैं ना, ये 1 में पढ़ लिया होगा. तो ट्रांजिएंट है सर. So क्या होगी, shape क्या होगी? क्वेश्चन So what is the voltage here? सर कुछ भी नहीं है. स्विच ऑफ. Then when you at t equal to 0. VDC. So before t equal to 0. Okay. Then VDC जो होगा वही V नॉट होगा. it will ऐसे होगा. Will charge up to Slowly. VDC. Yes. So this is the voltage across the capacitor. It will charge up to VDC. Is this answer correct? No. क्या missing है? या क्या assumption है? ठीक है ये under some assumption. पर वो assumption फिर आपको बतानी पड़ेगी. एक तो रेजिस्टर है उसकी वजह से और कैपेसिटर की अपनी भी प्रॉपर्टीज होती है जिसको हमने माइंड में रखना होता है. क्या property? एक मिनट सर. वो जो आपको याद आ रही है ना कि it acts as a open circuit for हाँ उसकी अपनी प्रॉपर्टी वो एक खास लिमिट के लिए ओपन होती है उसके बाद जाके वोल्टेज 0 होगा. माशाल्लाह. yeah. Okay, so resistor वो सिर्फ चार्ज कराने में स्पीड को कम है, लेकिन otherwise it will charge it. You have assumed that the capacitor was not charged already. अच्छा. इसलिए आपने यहाँ से शुरू कराया ना, 0 से. ये capacitor के गिर चार्ज around the capacitor है ना, across the capacitor है. So you are assuming that it's not charged already. What if it was already charged? So it had a charge V naught before t switch बंद करने से पहले भी उस पहले से चार्ज किया हुआ था आपने थोड़ा सा. Then is this answer correct when you throw the switch at t equal to 0? Now where do you start? What? Right? Was already charged a bit. So this answer is correct, but it has an assumption. What is the assumption? Zero state. Initial conditions are 0. इसको हम कहते हैं zero state. Yeah. So 0 state में what we always require is that before the input comes in, everything has to be 0. The output cannot be there. ठीक है? Whereas in this case, the input यहाँ से आना है ना, ये जो current आना. Even before the input started, there was an output. आप इधर मल्टीमीटर लगाएं before throwing t इसको switch को बंद करने से पहले. If this guy was charged up to some V naught, so let's call this V capacitor. This is V naught. It was charged up to some value. अगर आप मल्टीमीटर लगाएं तो 0 input आएगा, 0 reading आएगी, V naught आएगी reading. Yeah? But I haven't even connected the circuit. Where am I getting the response from? Who is driving that response? It's the state, the current state of the capacitor that is giving me this output. Yes. So basically, in general, what we have in at least in LTI systems is that the total response of a LTI system is the whatever you get here plus whatever you are gonna get here. This is the 0. कौन सा response है ये? सर वैसे मुझे लगता है कि इसमें टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट नहीं होनी चाहिए क्योंकि उससे एक कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है. ये 0 input response. 0 स्टेट अगर इसको कहें तो इसको. Yeah. So this is 0 input response, meaning I was getting this response even before I gave any input. मल्टीमीटर लगाए ना उसके गिर्द, अगर वो चार्ज है ऑलरेडी तो रीडिंग आएगी. Yes. Now this was the 0 state response, which is saying, okay, if I assume that this was completely discharged, then how does the output look when I give it the input? Normally for LTI systems, the total response
is actually a simple sum of the zero input response and the zero state response. Okay, नहीं हो रहा तो सलीम सर मैं कह रहा हूँ कि इनमें से कोई हम एक ही टर्म यूज़ कर लें और उसकी एक कंडीशन कह लें कि वो इनिशियली उसके अंदर कोई ना कोई फिर वो टोटल रिस्पांस होगा ना जो आप कहना चाह रहे हैं. The total response is, if the initial state is 0, then the total response is 0 input response. If the input is 0, the total response is 0 state response. Okay, any response you're getting before you give the input or when the input is 0 has to be driven by the initial state of the system. Yeah, so that is 0 state. If you are giving an input and the system initially was already having some state non-zero, then the response will be sum of those two for LTI system. Okay, so now where does impulse response fall? What I am saying is that the impulse response is actually this guy. Okay, the impulse response assumes that the system state is 0. Okay, if it is not, then you need to find that also, and that will help you give the full response of the system. वरना जैसे यहाँ आपने जवाब तो दे दिया, लेकिन you had an assumption in mind, right? So if you call this as impulse response, you call this the response of the system. No, it's the 0 state response, yeah, which is the impulse response. That's fine. Now let's look at this very briefly through this some specific values. Yeah, let's see. अब ये जो बात है ना, इसकी 2 लाइनें आपकी समरी नोट्स में जानी चाहिए. Yeah, initial condition is 0, output is 0, state response equal to impulse response. कितना बड़ा तो नहीं है, छोटा सा है, ऐसे ही है ना. लेकिन आप नहीं लिखेंगे और फिर आप घूम जाएंगे क्या, फिर आप एग्जाम में सोचेंगे कि इम्पल्स रिस्पांस जो है वो ZIR था या ZSR था, राइट. और बल्कि ये काफ़ी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, राइट. सो लेट्स टेक अ वेरी क्विक लुक एट 0 इम्पल्स रिस्पांस एंड 0 state response. It's just the matter of separating the response of the system to its own state and the response of the system to an input. Let's say you have a xn, and I know that the response of the system is half xn plus xn minus 1. Yeah, that's it. Okay, some LTI system. मैंने उसका response का model आपको दे दिया. Now what is y? Let's say xn, yes, is equal to 0 for all n. I'm not giving any output. What is yn? So it बता सकते हैं इस सिस्टम में yn क्या होगा? So I'm not giving any input, or I'm giving 0 input, let's say. So output क्या होगा? 0 रहेगा. Yes. So this system, fine, very easy, because as long as there is no input, there is no response. Fine, makes sense. Now let's make things a bit more interesting. Let's say our output is not this. Instead, our output is 3xn plus 0.8 yn minus 1. With the same condition now, that I don't give this system any input at any time. Xn equals 0 for all n. Yeah? What is the output? You still get 0, I guess. 0 नहीं है. 0.8. राइट साइड वाला पार्ट जो है वो है. So depends. Your answer will be, the output will not be 0, or at least it will depend on what? Yn minus 1. Yeah, which is the initial condition. Yeah. Now that means
this kind of system can still give you an output even before you start giving an input. Yeah. Why? Because this system was, its state wasn't at zero. इसकी initial conditions zero नहीं थी. ये जो आप calculus में करते हैं ना, वो असल में आप यही चीज include कर रहे होते हैं. So let's say now I help you out and I say, and I give you another information. I give you an initial condition. अब क्या होगा yn? 8 होगा या ये आप मुझे y0 बता देना. yn तो पूरा निकालेंगे ना, लेकिन you're right. We can calculate y0, right? y0 is 3 0 plus 0.8 times y minus 1, which I already gave you. Yes, to get things started, ये होता है initial condition का फायदा ना, पावर उसकी देखिए आप. So before this we said, okay, even if input is 0, we feel that the output may not be 0, but we couldn't give you a number, yeah, because we need something from here. Now as soon as I give you the initial condition, याद है कैलकुलस में initial condition नेगेटिव में होती थी ना अक्सर, इसीलिए उससे पीछे तक क्या हालत थी सिस्टम. So y minus 1 equal 10 मैंने दे दिया. Now can you solve it for y0? This is 0. I'm not giving any input. This is y minus 1, which is 10. Yes, so I get 8.8 times 10. What is y1? 3x. Equation लिख लें चलो. y1 is 3x1, which is 0. Yeah, I said xn is 0 for all n. 0.8 y 0. What's y0? y0 is 8. अभी निकाला. Iteratively calculate होगा ये, ठीक है. So you will get y1 as 8 times 0.8. What about y2? आप तो बता दे जल्दी. सर y1 में जो 3x वाली पार्ट कहाँ है? I'm not giving any input, I said. Yeah, xn is 0 for all n. So 3x1 is 0, 3x2 is 0, 3x0 is 0. मैंने इनपुट दिया ही नहीं सिस्टम को कभी, ये फिर भी मुझे आउटपुट दिया जा रहा है. आ रहा है ना आउटपुट ये. अच्छा, तो क्या आएगा? वो आपने शायद कैलकुलेट कर दिया, वरना मैं थोड़ा एनालिटिकली ऐसे लिख सकते हैं, राइट? करके देख लेना. y2 is 3, this doesn't matter, 0 है. 0.8 times y1. So हर दफा 0.8 ने पिछले से मल्टीप्लाई हो जाना, बस यही है. तो देन व्हाट इज yn? आप बता दें जल्दी से. 8 into 0.8 and with n is नहीं, anything नहीं. हाँ, मैथमेटिशियन क्या सोचना होता है. anything, केक डाल देना. राइट. सो इंटीजर्स चाहिए ना, 0 1 2 3 4 so on. Now notice this system is giving me output. दे रहा है ना, और मैंने अभी तक कुछ दिया भी नहीं उसको इनपुट. Yeah, so where is that output coming from? Who is driving that output? अब पता है कौन ड्राइव? अगर मैं इसको 0 कर दूं ना, तो ये सारे जवाब आपके 0 हो जाते हैं. कौन ड्राइव कर रहा है इसको? इनिशियल कंडीशंस, इनिशियल स्टेट. या सो दैट इज द 0 इनपुट रिस्पॉन्स. I didn't give it an input, but it is being driven by its initial conditions. वो इसको ड्राइव करेंगे. Yeah, okay. Now let's change things a bit. है मिड है ना मिटाई सर. ना मिटाएं. मिड भी है. मिड भी है. सारे मसाइल इकट्ठे होते जा रहे. ये है आपके पास नोट्स हैं भाई, स्कैन पड़ेगा. So, ये सारे के सारे मेरे हैंड रिटन भी और स्लाइड्स भी आपके पास PDF है. हैंड रिटन किधर पड़ा हुआ है?
नीचे स्क्रॉल करोगे मिल जाएगा 300 350 जो पेजेस है अच्छा ना, वो इतना नीचे मैं नहीं गया अभी हाँ तक। चले जाए थोड़ी रहने देर दीजिए। ऑल ऑफ दिस इज देयर सर वो सीक्वेंस में लेक्चर वाइज या कैसे होगा लेक्चर वाइज है। फिर सिर्फ शायद एक कोई स्लाइड्स जो फोरियर की हैं वो थोड़ी शायद शुरू में आ जाती हैं, बीच में स्लाइड्स पूरी करने की, लेकिन अदरवाइज ये इसी ऑर्डर में है जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। सो एनीवे सर ये जो इनिशियल कंडीशन आपने बताई n-1 है ये -1 है सादा? ये यस सर। इनिशियल कंडीशन है ना y at -1 was 10। नहीं y at n-1 हम नहीं लिखेंगे ताकि उस पूरी चीज को नहीं हमें पूरी की क्या जरूरत है, कर लिया ना हमने। If I give you y -1 equals 10, can you solve this? Let's try. y0 से हमने शुरू करना है ना, so y0 is 3x0 plus 0.8 y -1, वहाँ 10 रख दें, ये तो 0 है। अच्छा at n is equal to 0। हाँ, अब ये इटरेटिवली सॉल्व होती जाएगी, बस एक कंडीशन आपको चाहिए थी। सर ये गिवन होगी कंडीशन। हाँ जहाँ जरूरत होगी, अभी सिर्फ आपने समझना है कि क्या समझना है कि देयर कैन बी सिस्टम्स दैट आर गिविंग यू आउटपुट इवन बिफोर यू हैव गिवन देम एनीथिंग। Yes, that output is not the impulse response. That output is being driven by the state, and we call it zero input response. Before, yeah. बस ना करें Yeah, don't tell them. अच्छा, let's say we say now we change the things and we say the input is there is an input, okay, and the initial condition is 0. Okay. अब हम जा रहे हैं ये जीरो स्टेट रिस्पांस हाँ जीरो स्टेट रिस्पॉन्स जिसको हम कहते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स, या सो लेट्स से नाउ व्हाट इज दिस, या व्हिच मैचेस विद इम्पल्स रिस्पॉन्स द केस ऑफ दैट। सो क्या होगा जी, कोई बताए जल्दी बताए, y0 क्या होगा, y0 3xn मैं अपने एक्शन बता दिया ना, 3 डेल्टा है। व्हाट इज दैट, y0 बताएं मुझे। जीरो अच्छा इनिशियल कंडीशन 0 हो गई है, डेल्टा 0। व्हाट इज डेल्टा 0, डेल्टा 0 क्या होगा? अभी जीरो होगा 3 One 1 होता है यार, डेल्टा 0 1 होता है, डेल्टा 0 1 होता सर इसमें है। मुझे ये बताएं डेल्टा डेल्टा क्यों आ गया इसमें? I am saying now that I am giving an input, ये तो मैं आपको conditions बता रहा हूँ ना, right? I am telling you this is the system सही है। and now I am saying I am going to give it a delta ये नहीं input. देखा मैंने, आपने अच्छा चेंज कर वो दिया ठीक ठीक है है। And I am saying the initial condition is 0. जीरो ठीक है So then y0 is One 3 होगा। times delta 0 plus point सर 3 होगा 3 होगा 3 होगा। अब जल्दी से y1 बता दें। सर ये फिर डेल्टा 1 हो जाएगा ना। पूरा बताएं जल्दी से। 3 डेल्टा 1 3 डेल्टा डेल्टा 1 क्या होता है? डेल्टा 1 सर ये नहीं पता ना कि क्यों नहीं पता? जीरो डेल्टा के अंदर ब्रैकेट में जो चीज है वो अगर 0 नहीं है ना तो पूरा डेल्टा 0। पूरा delta इट्स एज सिंपल एज दैट, इसमें क्या मसला है? हाँ तो वो तो गया, जीरो तो ये 0 होगा, नहीं 3 एक टर्म रह गई है ना। सर वो तो वैसे भी जीरो ही है है ना वो। सर, नहीं वो क्यों 0 है भाई, 0.8 क्यों 0 है? 0.8 हो जाएगा क्योंकि वो मैंने y-1 को 0 कहा, इनिशियल कंडीशन। अब तो आपने उसकी स्टेट बिल्ड करनी शुरू कर दिया, वो स्टेट भी काम शुरू कर तो नहीं देगी, किधर है हैं? तो नहीं So let me write it. y1 is 3 delta 1 plus 0.8 y0. n is 0, n is 1 ना, सर 0.8 तो ये तो अभी निकाला ना आपने, सर 3 आंसर आएगा इसका 3 times 3 0.8। into 3 0. आंसर क्यों आएगा? 3 into 0.8 यार यस अब y2 बता दी जल्दी से। y2 के लिए अब करेंगे 1 y1 Yeah, of course. y1 So this will be y2 Y2. here. y2 is 3 delta 2, which is 0, 0 plus 0.8 y1. 1 y1 क्लियर आ was जाएगा this yeah, oh it will be। yes sir अब yn बता दें जल्दी, ऊपर n लगा देना n लगा दो बस n काम होता है n लगा दें which बस। can be any integer Yes, so it will be 3 times 0.8 and Yeah. n is 0, 1, 2, 3. Yeah. Yeah. Yes. So this you get, what is this now? 0 input, Input. sorry, 0 state State. response. Why? Because you assume that the initial condition is 0. Yes.
Now नहीं सर इसमें इनपुट हमने दे दी ना उसमें तो इनपुट नहीं है फिर भी वैल्यूज आती हैं वो फिर जीरो इनपुट रिस्पांस है वो जीरो जीरो इनपुट हाँ वो zero जीरो input response और and ये ये zero state response. State will make sure दिया। that is state. Now what happens when these two are both happening at the same time? Things get pretty complicated. ये फिर डबल एंड ये अच्छा जवाब है। वो जैसे पूछते हैं ना कि 18वीं सदी के साइंसदानों के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या जानते हैं? जो भी जानता है। यही के सब मर चुके हैं। ये तो जानते हैं ना। ठीक है तो है बस ये आखिरी है तो so what happens if you have an input and the initial state is not zero? अभी मैंने बताया पहले क्या होगा वो total response. ऐड कर देंगे Yes, so you will simply add the zero input response with the zero state response. तो क्या था हमारा zero input response क्या था? किसी को याद है? Zero input response तो हमारे सामने है ये रहा. Zero state response भी हमने निकाला था. So I'm going to call it zero state response and zero input response क्या था? 8 multiply with 0.8 and Yeah, ठीक था. yes sir तो the total response फिर क्या होगा अगर इन दोनों की एडिशन initial condition is not zero and you give an input, then if you studied them separately, whatever you got, just sum them. And you can prove it actually. अगर आप नहीं सम करना चाहते आप यहाँ से इसको लेके चलें वही जवाब आएगा. क्या जवाब आएगा? It will be 3 times 0.8 n plus 8 times 0.8 n. This will be your YTRN, total response of the system. ठीक है? Continue on next month. That is 11 times 0.8 n. Same place. अभी टाइम है नहीं 20-25 मिनट नहीं है अभी. नहीं बस मैं तो सर कब लगेगा? अच्छा चलिए ठीक है. इस अभी एनी क्वेश्चंस? No. ग्रीन हो गया सर ठीक है. So make your summary notes about what is the impulse response, what is zero input response, what is zero state response, what is total response, and you should be able to solve this kind of problems iteratively also. Yeah. So that's it. Let's close this. very good